ना किसी से भी ले लेगा वो उसके लिए बता दें तो आगे तो कोई इजीली बता सकता हूँ मुझे नहीं पता एग्जाम में तुझे पता है कि तुम लोग एप्लीकेशन सेटिंग में बैठे थे ये यूज करोगे नहीं मैं उसको जानना चाहता हूं अरे जानना एडमिशन दे तो ले रखा है नहीं करते मैं सोच रहा था मैं तो जॉब करूंगा हां मैं मार्च में फाइनलाइज हां मैं फाइनलाइज कर दिया तो मार्च में कैसे आया हां एग्जैक्टली मैं मार्च में आता है तो तुम स्टार्टिंग से था ये आपस में वो चीज तो ऑफिस प्लीज वाला वो एक चाहिए फर्स्ट वो ये अरे ऐसे किया आपको बोल हां कितना चाहिए सर ऑफिस काय ऑफिस साइंस दूर करना आगे गली में क्या सही है ये दो बनेंगे एक होगा अपने चीज से मतलब ये वाली चीज ठीक है वो चीज ठीक है और दूसरा चाइनीज वो है वैसे चीज बहुत अच्छा है उधर का पता नहीं लगा ये ऐसे करना तेरे पैसे दे जब ठीक है करना है हां अब बोल either either fell back usually one back even out and बाहर तो आ गया जाके let's go क्या है वो कितना हो हां L हाँ मैं भी कभी साथ में 16 कल 6 सभी लोग साथ में कल 6 स्टडी और 6 तो क्या था कल मैं सोना क्यों क्या सोतो में 11 बजे इतनी जल्दी उसको बैठ के क्या करती है बैठ के पढ़ती हूँ 3 बजे सोती हूँ फिर मैं क्लास में नहीं जाती एक बार 10 बजे सोती फिर भी अभी तक वो नींद आती ही है तो सोई मत ना वैसे भी नींद आ जाए जो है क्या हेलो साफ मैं क्या कुछ नहीं साफ मैं ये है सर तेरी का कोल्ड ड्रिंक आ क्या रोज अंडा लाता है सादा डे वाला सादा डे ये प्रोड्यूस करते हैं जो अंडे के बाद रोक लाता है बहुत टाइम अंडे के बाद जो सबसे ज्यादा क्या रहता है डोसा जैसा हमारा इसके बाद लस्सी है क्या इसके बाद हमारा लस्सी है क्या लस्सी जितना लेट करेगा लस्सी नहीं ये क्या करने का बनाया
नहीं बस बस ये है चाहिए इसको बहुत बढ़िया पूछ मेरे को चाहिए फिर मैं पैसे लटकना नहीं अवस्थी को शायद लटकने के लिए नहीं होती देख रस्सी पैसे भी देगा तो रस्सी भी देगा क्या पैसे भी देगा तो यूज होने के बाद रस्सी भी वापस देगा यूज अरे उसके लिए नहीं चाहिए और अगर यूज भी हो गया तो मैं वापस कैसे दूंगा तेरे मम्मी को बोल दो लड़ते हुए कि पढ़ा को मम्मी कैसे करती पहले आगे देखिए उसके बाद में बोल दो वो देख हां मेरे को बारे में भाई कौन सी रस्सी रस्सी वाली रस्सी जो रस्सी होती है देख भाई ऐसी बहुत टाइप्स होते हैं नायलॉन में होती है मोटी वाली पतली वाली दो चाहिए बीएस में भी लोगों को बात पतले रिबन चाहिए उसको बोले समझ लो साथ को बांधना है तो मैं को वैसे जो बनाने की गलत बात है वो तो छोड़ मेरे को उसको तो तराजू पे ऐड करना चाहिए इससे मुझे अभी कल या परसों भी बनाने का डॉक्टर निकाला था इसमें हेलो उसमें भी लिया तो इधर बैठी थी हां तो उसने फिर वापस से अभी का शिफ्ट किया ज्यादा दे दिया बिचारा बहुत थोड़ा है वो वापस नहीं आया अच्छा नहीं आया चाहिए एकदम ठंडी है मुझे तो नहीं लगी भाई जैसे स्कूल में स्टेप करते कुछ ना कुछ चालू हो जाता है नहीं आया भाई छोड़ के उसने स्कूल जाना है शिफ्ट हो गया ये अभी के लिए हम आए कि नहीं अभी उस दिन उसको स्टोरी डाला था 7 बजे मैच हां मैं क्या बोलूं नहीं अभी की आओ क्या बोल रहे तुम लोग चीज में तो ग्रुप में तुमने कैसे सेक्शन में नंबर से मेरा सर्च करा था क्या कौन सा हाँ भी है उसका नाम भी मेरे से मिल रहा है बहुत गुस्सा है वो मंडी से भी शिफ्ट कर देते हैं सी भाई देखो महल पता है अच्छा ये उससे शिफ्ट कर रहा है सबसे पहले मेरे बेच फिर मैं कौन था तेरी क्रैश फर्स्ट प्लेस इन क्रैश मैंने तो याद है मैंने उसको कितना बोलते थे कितना मैं कौन था तो उसको इतना बोल दे इस स्कूल में भी दे अरे वो ये तो ऐसे ही है आने जैसी एकदम पहले नहीं मतलब उसका कैसे बैठा था है कैसा वो बेंच में थे हाँ 7 स्टार्ट में अरे हाँ अपना प्लेस में डिजाइन के साथ बैठा था क्या मेरे साथ मैन बैठा था किसके साथ बैठा था और फिर हम लोग कुछ हो गए तो हमने वापस प्लेस चेंज कर दिए तो हम लोग वापस ऐसे बैठे थे मैं पार्थ राजवर्धन राजेश आरव हम लोग अलग से बैठे थे तो तुम लोग को बैठा के रखा था हम लोग चल अच्छा था डब्ल्यू डब्ल्यू से बहुत मार्क्स आते थे है ना 95 वो इजी भी 90 अब आज तो थोड़ा एक बुरा साइंस एग्जाम में रोड देखो 49 70 दो है फिर एक में मेरे को 76 बनाते हैं सही बनता है अच्छी अभी तो 16 में चढ़ा रही थी एक मिनट तो बात हां मेरे को थोड़े ऑप्शन मना गया नहीं हां भी वही थे नहीं होनी चाहिए हमारे पास टाइम पे थोड़ा अभी इधर भी ठंडी वहां भी ठंडी है सर को एसी बंद करने बोलते हैं बोया तो था वो जब बेटा जो गांव है तो ये तो शिफ्ट हो गया पता नहीं वहाँ पे जो शिफ्ट हो गई थी लगता है कल आना है इसको सबसे प्रॉब्लम था पेन लेकर सबसे बात सबको सिचुएशन की आज तक ठंडी यहाँ भी वही है ठीक है बैठ और बता कैसा है ठीक चल रहा है वर्ष का
कैसा गया गुलाब 4 गुलाब ये बिल्ला बिल्ला Spider. बोले तो बोलने में शुरू ही बहुत चिढ़ इसको वैल्यू इसको देखने नहीं सी वो तो उसके साथ सामने बैठकर भी पता चलता है वो और भी नहीं सकता इसको और अभी ना होगा यार वो मैंने को बहुत एक्सेप्ट भी करती है इसको आज नहीं पता होगा फिर भी मुझे अभी याद नहीं है फिर गई हूँ जाने दो बट पूरा 10 मिनट्स करते क्या हैं लोग बस याद Okay, there is one video. This I'll show you a little bit later. Huh? So let us cover the portion first. Now look here. So when you are saying raw material based, what are we trying to understand? Agro based matlab the raw material comes directly from agriculture. They'll ask you what are agro based industries. So what is the answer? Are those industries foreign raw material coming directly from agriculture? Example, raw cotton, cotton textile. Sugar cane, sugar industry, rubber. Mineral based, what will you say for mineral based? No, how do you say what are mineral based industries? Are those industries where raw material comes directly from minerals? Ye likho, side mein. Ek do baar I think students forget. Agro-based industries are those industries wherein raw material comes directly from agriculture. Wherein raw material comes directly from agriculture. Then you write mineral based, wherein raw materials are mainly minerals. Example को तो आपको मालूम ही है ना, wherein raw materials are mainly mineral. उसका best example है iron and steel. उधर आपको example लिखना है तो ऐसा लिखना है raw cotton, cotton textiles. Raw cotton, cotton textile. Raw cotton, cotton textile. Consumer का भी लिख लो because there is no definition for consumer industries, है ना? Which mainly manufactures consumer related items. Which mainly manufactures consumer related items. Which industry have written example? You are saying no. I said remain up. First of all, you didn't answer the question. Second, you went for washroom after 10-15 minutes. I said you remain up. Ha. What did I say? Example, you write any. You can write sugar industry. Then you can write bread, toothpaste. Examples. day to day Gayatri, you understand? You go up. You are making me angry here. I said remain up. Simple word. You are a girl. I cannot push you up. Me. And you, how daringly you are coming in, I am there, you didn't ask the permission also. When all children are in, right? No,
I will not allow. उधर जाइए उधर जाइए. Then you write main role industries. Are those industries which plays vital role or important role for the entire industrialization process, which plays an important role for the entire process of industrialization. That's very casually going out, or at this also good friend. Last lecture basic. What is the of which plays vital role? Entire process of industrialization. उसीलिए उसका नाम मेन रोल दिए है ना, जैसे आप मूवी में मेन रोल साइड रोल मेन एक्टर जिसके ऊपर पूरा मूवी For industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन. उधर भी लिखो आयरन स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री. Copper smelting and aluminum smelting. बट कॉपर्स अभी हम लोग नॉर्मली स्टैचू मेकिंग पूजा रिलेटेड की तरफ. एक टाइम था कि कॉपर वाज डेली यूज ना, प्लेट्स होता था. मे बी आई हैव गॉन टू राजस्थान, देयर दे मेक यूज, बट आजकल वो भी नहीं करते हैं. वो ऐसा यूज. Beauty qualified degree. हां तो लिखो. Now let us go to B on the basis of investment. He will read what is there in the basis of small scale में क्या दिया है. It is based on the total investment. 50 lakhs कुछ रहेगा. Sorry. EDV. On the basis of the investment, a small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of the industry. This is the maximum investment allowed is rupees 1 crore. If the investment is more than 1 crore per investment, then it is known as large scale industry. हाँ, so less than 1 crore इधर लिखना small scale. Actually 50 lakhs to 1 crore लिखो. That is small scale investment. And large scale is above 1 crore. And actually number of laborers भी आप लिख सकते हैं. 15 to 50 laborers for small scale. 50 lakhs to 1 crore. So it's between 50 lakhs and Yes. Lakhs to 1 crore. And large scale you write above 1 crore. Initial investment. And for industry small scale you write 15 to 50 laborers. Workers. And large scale तो आपको मालूम है, कुछ जगह पर तो ज्यादा है, कुछ जगह पर machines है, तो you write 100 and above laborers, 50 to 100 laborers. बट लार्ज स्केल में कभी-कभी मैंने ऐसे देखा लेबरर्स कम है, मशीन्स ज्यादा है, तो इसीलिए हाँ बड़ा फैक्ट्री. सो छोड़ दो, उधर मत लिखो. एग्जांपल स्मॉल स्केल का यू राइट फायरवर्क्स, स्टैंडर्ड फायरवर्क्स शिवकाशी इन चेन्नई. उधर एग्जांपल दिया है. Then you write large scale again iron and steel. Baba, iron and steel is everywhere. so first what क्या है? Standard fireworks. Got it? Now when we go to this, इधर थोड़ा सा questions आता है. What are public sector? What are private sector? Public sector का another name क्या है? Government sector. So what you have to write? It is fully owned by government. So दो ही industries है. One you write IR. What is IR? Indian Railways. Two, you write defense. In America, defense is a private sector, but in India, 100% public sector. So as a public sector example BHEL or हाँ, वो sector full form लिखो. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल. इसका नाम. दूसरा क्या दिया? नाल्को. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये भी लिखो फुल फॉर्म. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. Be very careful. Sir, it's small scale. What is it? This one?
नहीं स्मॉल स्केल में भी दिया है. Bharat Heavy Electrical Limited, SAIL Steel Authority of India Limited. भारत अभी Electrical Limited. definition. इसमें नहीं. SAIL में लिखो Steel Authority of India Limited. So you told that difference in other countries. Private sector like America. India में तो 100% government क्या है? Like you can say DRDO, है ना? ये पूरा government क्या है? So how like a specific company owns the difference of other? No, what देखो अभी HAL is a private company. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एरोप्लेन बनाता है, correct? But इसका orders mainly government देता है. Yes. आपको मालूम है बेंगलुरु में ही है. प्राइवेट भी बेचता है बट इट कैन नॉट. गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा है. अभी जो मिराज 31 या मिराज 2 जो भी आ रहा है सब HAL गवर्नमेंट के लिए बना. But order government देते हैं कि ये टाइम के अंदर मुझे इतना चाहिए. Like yesterday I was watching one of the news channel in which they are saying कि now America is going to not going to already started selling weapons to Turkey. Yes. अभी अमेरिका I don't know what that Donald comedian is doing with वो थोड़ा सा वैसे मुझे पहले से ज्यादा उसको नहीं पसंद करता हूँ मैं. And Pakistan might get this S-400 जो India was using so strict. What is the use? But India is dependent on 100% indigenous weapons, whether it is Akash, whether it is BrahMos. What happened here? What happened? Why? You wait, let me finish. I'll talk to you. You sit there. You need to sit. So we always believe that these are those industries which are in the hands of the government. अभी रेलवे government ने privatize किया है. क्या privatize किया है? एक ट्रेन है जो government नहीं चलाता. तेजस. Yeah. That's a private train. But उसका fare सुनेगा ना आप बोलेगा flight में निकल जाता है. 6,000, 5,000 और हमको मैं भी ट्रैवल करता हूँ ऐसे नहीं कि बट 3,000 फर्स्ट क्लास 4,500 ओके. अभी ये जो नया चल रहा है वो कौन सा है? वंदे भारत मैंने सुना दैट इज गुड. आई एम रेडी टू पे 2,000 because the speed is too good. Then when I say private sector you write Reliance. Then you can write Tata. 100% is private cap में है. Then joint sector you write management and ownership. Management and ownership. Both public and private sector join. उसीलिए उसको joint sector बोला. एग्जांपल में ऑयल इंडिया वो एक ही है ऑयल इंडिया लिमिटेड. ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल ही कंपनी का नाम. ये दिस इज सी ए सॉरी दिस इज जॉइंट सेक्टर. अभी जॉइंट का मैं दे रहा हूँ वो लिखो. कोऑपरेटिव का मैं देता हूँ. कोऑपरेटिव आया अमूल. राइट ऑन अमूल. बोथ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें. I am giving it. All the farmers, dairy farmers. अमूल डाला उसके आगे लिखो. All the dairy farmers from Gujarat. जगह नहीं तो लिखो collective ownership. अगर वैसा है ना collective ownership लिखो. All the dairy farmers from Gujarat collectively owning Amul. And Amul का full form anybody? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. अगर जगह है तो लिखो. छोड़ दो. तो सिर्फ लिख कलेक्टिव ओनरशिप. कोऑपरेटिव मतलब कलेक्टिव ओनरशिप. Collectively owned Amul. Cooperative. Oil is a joint sector. Choir is a cooperative sector. Choir मतलब अरे वो
धागा बनता है ना वो मोटा मोटा जो महाराष्ट्र में इट इज द क्या बोलते हैं वो कोकोनट का जो पीछे वाला जो रहता है ना पार्ट, हाँ दस बोलते हैं दस भी नहीं आएगी, उसमें से वो थ्रेड बनाते हैं, दैट इज कॉयल। अरे घर में डोरमैट जो बनता है वो कॉयल ही है, जो भी है कारपेट्स भी बनता है। नाउ व्हेन आई से दिस वन, ये थोड़ा नया है, आप इधर लिखो हेवी इंडस्ट्रीज के लिए बोथ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर हेवी, राइट? heavy, both raw materials and finished products are heavy. Example, you write cement and then bracket में डालने का ACC, ambuja, both raw materials and ambuja, what is this spelling? This one, cement, the first one. Both raw materials and finished products are heavy. Light industry, उसका both raw materials and finished products are light. Example, you write cotton textile, Raymond's, I don't know, all the things. Cotton textile, no need to leave. Sir, what do we have to write? Both raw materials and finished product are light. Okay, and here both raw materials and finished products are heavy. Simple है. And finished products are light and heavy. Light में light लिखो, heavy में heavy. What is exactly meant by light and heavy? देखो, when I am making cement, मेरा raw material है sandstone, limestone, gypsum. मतलब ये तीनों को मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए heavy क्वालिटी में आता है. और सीमेंट का I don't know, even I cannot lift that 50 kg bag. Very heavy. है ना? तो raw material is also heavy and finished product जो बनते हैं उसको भी heavy. But let us see cotton. Is cotton, आपको मैं बोला 500 किलो उठा के लेके जा, हाँ कुछ नहीं सर, चलो सर मैं हेल्प जाएगा। And cotton textile बनता है, cotton जैसा heavy light नहीं है, but as compared to finished products like iron and steel, it is light. So that is why it is categorized into light industry. Clear? Any query? ये classification दिखता है बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। I made you to write very simple. एग्जाम आएगा तो डोंट गेट कंफ्यूज, दे विल आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ये लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल ये लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ए, ऑन द बेसिस ऑफ आरएम एंड एफ। अंडरस्टूड? कंज्यूमर क्या है ना, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ओके, सो यू कैन रिलैक्स, जस्ट वॉच दिस स्मॉल वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड इज द, नॉट अ स्मॉल वीडियो, इट्स अ वीडियो। So what is a manufacturing industry? Manufacturing industry actually refers to those industries involved in the manufacturing and processing of items. That is, they convert raw material into valuable products. It will take raw cotton, convert it into fabrics. Take the cocoons and convert it into silk cloths. Take raw rubber and convert it into rubber products. So this is the role of a manufacturing industry. Now, a manufacturing industry belongs to the secondary sector, because it takes the raw material from the primary sector, that is primary goods, and they are converted into finished goods. Now you must also know that the economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. How do we calculate generally the economic strength of the country? One of the easiest way is to find out what is the GDP of the country. If I take GDP of India, it is close to 3 trillion. But if I take United States of America, the GDP is more than 20 trillion. The reason is development in manufacturing industry. That is one reason. It is not the only reason. So we can say the economic strength of a country is measured by development of manufacturing industry. So we can say workers that are employed in the production of fabrics, automobiles, bakery, they all come in the category of manufacturing industry. Now, what is the importance of manufacturing industry? The importance is, now we already know, it is considered as the backbone of development. Because if manufacturing industry is well developed in the country is developed. It helps in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy. So how does it modernize agriculture? By providing machines, fertilizers. It will speed up the process of agriculture. It will increase the productivity. And that way it will modernize. It can reduce the dependency of people on agricultural income.
by providing them jobs in secondary and tertiary sector, so that the people who are already in agriculture, they can shift into secondary as well as tertiary. If I take any developed country, it is just 1 or 2% of the population involved in agriculture. But in our country, it is more than 50% is involved in agriculture. So we can say that industrial development is a precondition, that is prior condition for eradication, that is removal of unemployment and poverty from our country. It also brings down regional disparities, because if there are two different places within our country, one is well developed, say Mumbai city or Delhi city, and there is one neighboring rural area where there is no development and the people are poor. How can I remove the regional disparity, that is regional difference? That is very easily done by establishing manufacturing industries in those areas, because the people in those areas will get jobs and the standard of living of the people will develop. Another thing about manufacturing sector is that if we export the manufactured goods, it will expand trade and commerce and bring in the much needed foreign exchange. Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are actually prosperous. And all developed countries are involved in this work. That is, they take the raw material, convert it into valuable finished goods and export it. India has actually become a market. We are buying a lot of finished goods and they are coming from developed countries. Now, another thing is agriculture and industry both move hand in hand, because industry will provide machines and fertilizer to agriculture, and agriculture will provide raw material to the agro-based industries. And in this way, they move hand in hand. In the present day world of globalization, we are living in a global world. Means what? Today, whatever we are using in our day-to-day life, we are very well aware it is coming from different part of the world. Similarly, whatever is produced in our country is going to different part of the world. That's why we are living in a world of globalization. So when we are living in a world of globalization, the goods that we produce should be of a good quality. It must be at par in quality with those of the international market. Only then we can sell it in the international market. Now, what is the contribution of industry to national economy? Actually, it is 27%. When I say 27%, the share of the manufacturing sector is only 17%. So rest 10%, what is that? It is actually coming from mining, quarrying. Quarrying means removing stones, like Rajasthan is for marbles or Karnataka is for granite. When you are removing it and utilizing it, that work of removing is what is quarrying. Then even production of electricity or gas, all this is 10%. Okay, so in our country, the share of manufacturing industries is only 17%. But when you take just some Southeast Asian countries, like it is Indonesia, Malaysia, Philippines, so there it is between 25 to 35. That is much more than India. So we need to work upon it. The trend of the growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7%. So the growth rate is around 7%, but we are targeting 12%. Now, how are we going to achieve this target? For this, what the government has done is establishing the National Manufacturing Competitiveness Council. So this has been set up with an objective to achieve this target of 12%. Now we shall talk about industry, setting up an industry. If I want to localize an industry, set up an industry, what are the factors? So first thing is availability of land, but then it is raw material. So there are many industries that are raw material oriented industry. Means such industry must be established near the place where raw material is available. Supposing it is sugar industry, it should be established near the place where sugarcane is available, because sugarcane is heavy and bulky. And when it is being processed, it loses weight. That is, if I take 10 trucks of sugarcane, finally I will get only 1 truck of sugar. So it is advisable that this industry should be set up near the place where raw material is available. Same is with iron and steel industry. There also the raw material is heavy and bulky. And when it is processed, the weight will come down. Then it is labor. So wherever an industry is set up, cheap and skilled labor should be available. But in our country, laborers do migrate also. So we can get them. Then it is capital, a very important factor. Money is required for running any factory, any industry, transport facilities, market. Now in economics, the word market means demand. So I will start an industry only when there is a demand, there is a market. So there must be availability of market. Then it is government policies. I have to see I'm starting an industry, that's fine, okay. But is it so that the government is in favor of it? If the government is not in favor, the taxes will be high. There will be many restrictions. It will be difficult to run the business. But if the government is favoring it, just say government favors textile industries in India. The reason is it provides employment to a lot of people. And if someone is starting a textile industry, means he's solving the problem of unemployment in the country, government is in favor.
like that. So I should check out the government policies. So when all these things are available, based on that, I will set up an industry at a particular place. Some industries should be set up near the cities. Actually, electronic industries are always set up near the cities. Automobile industries are again set up near the cities because cities are well connected by roadways, railways, waterways. They are close to the market because market means I said demand and city has a big market. Now, industrialization and urbanization, they go hand in hand. When I say industrialization, what do I understand? Industrialization is development of industries in a country or region on a wide scale. And urbanization is the increase in the proportion of people living in the town or cities. Now, let us understand industrialization and urbanization go hand in hand. How come? Cities provide market and services such as banking, insurance, transport, labor, consultancy, financial advisors, all these things. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers. And this is known as agglomeration economies. So when a set of industries come together close, they are referred to as agglomeration. So gradually a large industrial agglomeration takes place. So a lot of industries come together. The reason is they will all get those facilities together. They can make use of the facilities that are available in a particular area. In this way, a city develops and industries also develop in that area. That is why we can say industrialization and urbanization go hand in hand. Now, let us understand classification of industries. Industries can be classified in different ways. First one is on the basis of sources of raw material. Based on the source of raw material, it can be agro-based industry or mineral-based industry. So talking about agro-based industry first, agro-based industry means raw material is coming from agriculture to the industry. Example is one, cotton industry. So when I take industries, among the industries in our country, cotton textile industry is number one. Then it is woolen industry, jute industry, silk industry, rubber, sugar, tea, coffee, and edible oil. So when I take all these industries, they are all agro-based industries because the raw material has to come from agriculture. Similarly, when I say mineral-based industry, in a mineral-based industry, the raw materials are minerals. So it can be iron and steel industry. When I say iron and steel, for manufacturing steel, we require iron ore, manganese ore, coal, and limestone. These are the four main raw material needed, and that is minerals. Similarly, when I say cement industry requires limestone, gypsum, silica, and coal. These are the four main raw material, and again, all these are minerals. So both are mineral-based industry. Then it is aluminium smelting, machine tools. So in all these areas, we are dealing with metals, means minerals. Then it is petrochemical industries. So petrochemical industries use crude oil as raw material, and a variety of products are developed. First of all, they are involved in refining of petrol, diesel, kerosene, paraffin, wax, tar, many products. Apart from that, they also are involved in making plastics, synthetic fibers like polyester ke kapde aate hain, they come from petrochemical industry. Then it is according to the main role played by them. According to the main role they play, it is basic or key industry. When I say basic or key industry, basic industry means it is a base for other industries. That means whatever they manufacture, that becomes a raw material for other industries. So here we can say iron and steel industry. Iron and steel industry is a classic example because all machineries are made from iron and steel industry. So if any other industry, if it has to run, it has to depend on iron and steel. Copper smelting, aluminium smelting. Next is cement. Now cement is again a basic industry because it is used by all the construction companies. It is a raw material for the construction companies. Then it is fabrics, because when cloths are manufactured, they are used by the tailors for stitching cloths. After this, it is consumer industries. Consumer industry means those products that we see when we go to a supermarket. Okay, are the products that we use in our day-to-day life. So we buy directly from the shops. It comes home and we use it. They are all coming from consumer industries. So industries that produce goods for direct use by consumers. This can be sugar, toothpaste, paper, sewing machines, and fans. So these are a few examples of consumer industries. On the basis of capital investment. Capital investment, it can be a large-scale industry and a small-scale industry. Now, what is a small-scale industry? Small-scale industry is an industry where the investment is not more than 1 crore. Now, this amount actually keeps changing, but right now, whatever is there in the books is 1 crore. On the basis of ownership. Now, on the basis of ownership, we have public sector, private, cooperative. These are all on the basis of ownership.
So when I talk about public sector, they are owned and managed by the government agencies like BHEL and SAIL. So one is Bharat Heavy Electricals Limited, another one is the Steel Authority of India. Private sector. Private sectors are owned and operated by individuals or a group of individuals like Tisco, Bajaj, Auto, Dabur Industries. These are a few examples. Next one is joint sector industry. Now, a joint sector industry is run by the state and individuals, that is, by the government and the individuals or a group of individuals. Say, for example, one such example is Oil India Limited, is jointly owned by the public and the private sector. These are a few more examples of joint sector. Next one is based on the bulk and weight. So, on the basis of weight, we have heavy industry. Heavy industry, example, iron and steel industry, because the raw material has to be brought by train. There has to be a railway line separately. Goods train only can bring the raw material. Trucks are not sufficient. Then there are light industries. Light industries are that which uses light raw materials and produce light goods such as electrical goods, electronic goods. Cooperative sector industries. Now, cooperative sector industry is unique. This is based on a kind of partnership. So this is owned and operated by producers or suppliers of raw material, workers, or both. Supposing in Maharashtra we have sugar industry. Now the sugar industry in Maharashtra has developed because of the cooperative sector. So it has partners, like one who runs the sugar mill, other one is the farmers. So what do? They pool the resources and share the profits or losses proportionately. That is why it is very prosperous. Another one is sugar industry is a seasonal industry. It does not work throughout the year. Rainy season, one rehta hai. And that is why Maharashtra has developed when it comes to sugar industry. One more is the coir industry, which lies in Kerala. So this is end of part 1. Are you understanding? Coir you are asking, na? Sir, I had it out. I didn't Let us learn the chapter money and credit. Well, What is money? Money is generally localization matlab every company or every industry depends on set of factors. Abhi I say there is one industry which is located in Sanpara, Palm Beach. You will say why? I'll say come. It is very close to the railway station. Raw materials coming from Nehru. Good transport available. So indirectly or directly I'm explaining the factors which help that industries to locate in my area. Actually, मैं देता भी हूँ factors of localization. What is factors of localization means? Set of factors why that industry is located. अभी जैसे मुंबई का Bollywood and California का Hollywood. Which one you like better? Definitely Mumbai, sir. California में तो ठीक है. So if I ask you why Bollywood is located in Mumbai, तो किसी ने बोला सर पहले ना वो बॉम्बे था ना, इसलिए Bollywood. Why Bollywood is here? Sir, it has been ages. You know the first movie released, Harishchandra Raja. Sorry, the movie name is Raja Harishchandra. मैं आपको दिखाऊंगा जब वो फिल्म्स का सब आता है. It was. It did not have. Only songs, no dialogues at all. And उसमें बेचारी जो लेडी बन के आती है वो भी जेंसी है. Yeah, because of that. And it used to be laughing. And जिसने बना is our own मराठी मानुस, दादा साहब फाल्के. आज भी अवार्ड मिलता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड. There is, I guess, a playhouse or something like that. Correct. And the biggest actor India could see was our Ashok Kumar Ganguly. सर वो गांगुली नहीं सर, उनका पूरा फैमिली गांगुली है. And Kishore Da, my very favorite singer, is a very youngest brother of the family. And वही बेचारा पहला डेथ हुआ उसका. He died at the age of I think 44 or 45 only. But उस 45 years में भी किशोर ने सब कुछ कर लिया, direction, production, singing, music. He was a versatile singer. So why I'm explaining this? After this, you will be write the heading in your notebook. Say my case. You copy all this, or you play. Write the next study. Factors of localization. Factors of localization. Yeah, आपके लिए ऐसे कुछ रखा हूँ, हाँ? बस नहीं, ठीक है. Are those factors which are primarily responsible for? Are those factors
which are primarily responsible for setting up of a given industry for setting up of a given industry in a particular region only. Sir, can you repeat again? Set of factors which are primarily responsible for रुक जाएगा ये set of factors है ये primarily set of factors which are primarily responsible for location of a given industry. हाँ बोला Setting of in a particular region. Example, iron and steel in Jharkhand. Put a dash. Chota Nagpur Plateau. Example first. Iron and steel in Jharkhand. Chota Nagpur Plateau. सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील छोटा नागपुर से निकलता है तो आयरन एंड स्टील इन एंड अराउंड नहीं है ठीक है अभी यू फाइंड आउट फ्रॉम द वॉल्यूम कितना फैक्टर्स है वो आप लिखो लेबर्स रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट है ना उधर दिया है factors of localization नीचे लिखो पहले लिखो easy availability of raw material good supply of laborers what's it here? नहीं दिया तो लिखो I'm leaving first point you write easy availability of raw materials second you write easy availability of raw materials next you write labor facility good labor availability जैसे भी लिखना है easy availability of raw materials and laborers एक ही पॉइंट में भी डाल सकते हैं labor facility next good transport and communication. Next, The road transport and communication. Next, electricity, gas, and water supply. Electricity, gas, and water supply. Next. roads. Okay. Suitable location. Put a dash. Nearness to the market. No, new point. Suitable location. The nearness to the market. Super location. Put a hyphen nearness to the market. Nearness. Closeness to the market. Yeah. ये सब रीड करो if you feel anyone query please ask me
We are going to the main chapter. अभी तक तो only क्या बोलते हैं introduction पे चल रहा था. अभी going to the volume ready रखना और book ready रखना. Now we are going to break free from here. So we will go agro-based industries. There are 3 industries given. We'll go mineral-based industries. There are 3 industries given. मैंने कहा है automobiles. देखो. Yes. फिर लास्ट में है IT and electronics. बस ये पूरा चैप्टर इतना ही है. Are you understanding what I am saying? Look at first agro-based में अभी आप लोग एक नया पेज में डालो agro-based industries and write 3 industries one below the other. One first is textile ना. हाँ textile. उसमें A आप 1 2 3 डाल सकते हैं. Cotton textile. B jute textile, correct? है jute भी है ना, and silk भी है ना, silk industry. ये अभी आप एक काम करो, न्यू पेज में डालो एग्रो बेस्ड एंड उसके नीचे ये तीनों लिखो 1 2 3 लिख सकते हैं. टेक्सटाइल not given, so छोड़ बस. Take a new page, write this heading, agro based industries. तो उसमें टेक्सटाइल में 2 है A and B, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल. फिर मिनरल बेस में एक ही है ना, आयरन एंड स्टील. ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. एंड बी वेरी सिंपल, जैसा यू की वॉल्यूम में दिया उतना ही पढ़ना है. उसका सेटिंग अप, उसका रॉ मटेरियल, उसका प्रॉब्लम्स एंड उसका इंपॉर्टेंस. So you are not studying the industry in depth. नहीं, that we will do it from now. Good, at least she has packed up my method of writing, huh? समझ में आ रहा है ना भाई? उसके नीचे फिर mineral based industry और उसमें एक ही लिख दो NH3. तो अभी एटलीस्ट आपको एक ब्रेन मैप बना दिया हम लोग ने पूरा चैप्टर. अरे पूरा चैप्टर में इतना ही है. ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल के बारे में रीड करेंगे, मार्क करेंगे और मैं क्वेश्चंस दूंगा दैट यू हैव टू फिल अप द आंसर्स बाय नेक्स्ट लेक्चर, बाय कमिंग सैटरडे, नॉट टुडे. करेक्ट? चलो. So cotton textile she is reading. Textile industry she is reading. Read slowly. I'm going to give explanation of that. The textile industry of the price unique traditionally Underline the word unique. it contributes significantly to the industrial production. Yeah. 30%. Now, if I say cotton, we come to know when the British came to India. In the name of what they came? English East India Company. British East India Company. What did they search? Raw cotton. Then why did they search raw cotton? जब वो तो उधर से मिलता था ना, उनका industrial revolution start हुआ. And America used to in those days supply. You know, America was a colony of British only. How many of you know that we say कि Britain is a country where sun never sets? क्यों ऐसा बोलते? ये last time मैंने बोला था. Because they have colonies all over the world. 143 countries. दूसरा बोलता ब्रिटिश एम्पायर was the empire जहाँ कभी सनसेट होता ही नहीं था. ऐसे होगा ना, एक कंट्री थोड़ी पकड़ा था. और इंडिया इज आल्सो इनसाइड दैट ओनली. और अभी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं, उसमें इंडिया भी है. और उधर उनका जो प्रिंस या प्रिंसेस या रानी का कुछ भी होगा ना, ऊंच नीच, हमारे यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है. आपको शायद मालूम नहीं, जाना ही पड़ेगा. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अभी भी अपने आप को राजा मानता है, राजा. बट अभी लंदन का तो हालत बहुत खराब है, मतलब इकोनॉमिकली दे आर वेरी. हां बस. So we always believe, हाँ, this America में जब वो American War of Independence start हुआ, they stopped the supply. इधर तो इनका machines चल रहा है. So they need two things,
raw cotton, and they wanted a market to sell their product. And that is the time this person who discovered the sea route to India, who? Yes, he was right. Many people say Columbus. क्रिस्टोफर कोलंबस आया था और उसने एक जगह देखा और बोला ये इंडिया करके निकल भी गया. But he didn't find India. He found something called as West Indies. सर फिर उस गले को आम का नहीं दिखता था. उसको क्या लगा जरा वो तो अभी थोड़े से लोग हैं ना खाना कलोटा और आइलैंड्स था. उसने बोला I found out. It was Vasco da Gama. Vasco da Gama was from Portugal. तो आज भी अगर आप इंडियन हिस्ट्री लेगा ना, पोर्चुगल वाज द फर्स्ट फॉरेन पावर टू रूल इंडिया. देन केम हूम? फ्रेंच. लास्ट वाज ब्रिटिश. और ब्रिटिश ने सबको हका ले चलो निकलो. देयर इज अ वॉर बिटवीन फ्रेंच आर्मी एंड इंग्लिश आर्मी इन इंडिया. एनीबॉडी नोस? अरे वो अलग था यार. फ्रेंच डी गॉल इज नेम एंड इज रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव ने डिगॉल को हरा के भगा दिया. भग जाओ अभी. आई डोंट नो यू might have gone to Goa or not. I have also not gone. तो आज भी आप पोर्चुगीज का रिलेटेड देखेंगे गोवा में दिखता है. हाँ, that was a very strong territory for them. I heard पोर्चुगीज आज भी आपको अलाउ करेगा उनका कंट्री में आने के लिए. Pondicherry French people will allow the Pondicherry people to come to France. Only आप उधर का राशन कार्ड या पासपोर्ट अगर पौंडीचेरी का दिखाए ना, तो मैंने भी ट्राई किया. फ्रॉम तमिलनाडु से आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू सम गेट सम पौंडीचेरी. लो चुपचाप बैठो, नहीं मिलता पता नहीं. आई गॉन टू प्लेसेस लाइक कारेकाल एंड माहे. ये पौंडीचेरी में आता है, यूनियन टेरिटरी. तो मैं फिर बोलता हूँ यार ब्रिटिश ने तो हमारा 200 साल रूल किया, तो हमारा पासपोर्ट तो ब्रिटेन में अलाउ करना चाहिए. अभी वैसे भी आप ब्रिटेन में जाएगा ना, you'll be shocked. Especially some provinces of Britain are taken by the so-called Islamic. उन्होंने तो उधर बोल दिया कि गोरा कोई नहीं अंदर आने का, ये सब हमारा. बर्मिंघम. and वो बोलता who are you to come inside. इधर तो हम लोग उनका रूल्स चलता है, इस्लामिक रूल. तो क्या बोलता है, कुछ तो वर्ड बोलता है, भूल गया. और एक 5 साल रुक जाओ. ग्रेट ब्रिटेन ऑफ लंदन की जगह पर ग्रेट ब्रिटेन ऑफ इस्लाम की जगह. एंड फ्रांस में भी कुछ कम नहीं है. बुर्का डाल के बहुत कुछ करता था. अभी वो एमेनुअल मैक्रोन ने थोड़ा कंट्रोल किया. यू रिमेंबर वन टीचर वाज beheaded. हाँ, you don't know? Because he made a cartoon and made written as Allah. स्टूडेंट ने उसका सबके सामने गला ही काट दिया. उतना उधर ये इस्लामिक कन्वर्शन है. I'm sorry to say, I don't know whether the point is catching your voice. Even Mr. Modi didn't come the Prime Minister ना. आज तक सोनिया गांधी इंडिया का भी वही प्लान था, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी बना देने का. You remember जब अर्नब का चैनल में 1, 2 या 3 साधु लोगों को पालघर में मार दिया, वो केस बहुत दिन तक चला. हाँ, पालघर क्या बेरात से आके, एंड वो पूरा नीचे जात के लोग हैं. तो सोनिया ने क्या कर दिया, चर्च स्टार्ट करके सबको पैसा देके कन्वर्ट कर दिया. तो वो उस टाइम पर कोविड था. तो 20 साधु जो है पासिंग दैट एरिया टू ब्रीफ देम कि आप अपना रिलीजन छोड़ के क्यों क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं. और दैट वाज द बिगेस्ट इंसिडेंट ना. इवन मानव के ऊपर भी लोग ने अटैक किया था. वो बहुत हाईलाइट करता था. वो बार-बार उसका नाम लेके बोलता था. उसका नाम सोनिया गांधी ने ही है. इटालियन नेम समथिंग डिफरेंट. उसको घर से उठा के गए ना पुलिस ने, और ये अपना घर के आगे जेल है, कलोजा जेल. अर्नब को तो उधर ही रखा था. When he came out of the jail, पब्लिक देखने का अनुभव से ने भी बोला देखो पूरा क्राउड है. And he was a person who fought with the Buddha. That was the time Buddha was the same time also politics है. So we believe that ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना लंदन से इंडिया में क्यों आया, in search of raw materials. हाँ, नहीं लगे. वो shoes. हाँ. Employment generation, 4.5 crore per person directly, the second largest after agriculture. Underline directly. Why they are using the word directly? Those who are working in textile. I mean, if I say people are involved in transport, is it direct or indirect involvement?
People are doing the packing of the cotton textile. Is it direct employment or indirect employment? You guys are not understanding directly. अभी ये मेरा cotton textile factory है, ठीक है? वैसा कुछ रहता है ना factory, उसका रूफ है iron cotton. इधर cotton बनता है, तो ऐसे इधर 300 people are working. एक guess है? But when the cotton comes out in the form of a bale, you know what is a bale? इसमें packed रहता है. Now it has to be packed in a way where it has to be transported. फिर यहाँ से एक ट्रांसपोर्टर आता है लॉरी वाला, वो लेके जाता है. Is a transporter, correct? अब ट्रांसपोर्टर लेके जाके मार्केट में छोड़ता है, एंड मार्केट से वो जाता है फैक्ट्री में, एंड फैक्ट्री से वो बनता है क्लॉथ. यू अंडरस्टैंड? या गारमेंट्स बना देते. चलो हम एक स्टेज को खत्म कर देते, उधर है कहां पे आपको. तो दिस इज द पर्सन हु आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड, जो फैक्ट्री में ही काम करता है, कॉटन बना रहा है वो. और ये पूरा पीपल इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है. अगर ये बंद हो जाएगा, where these people will get the job? तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ये को कनेक्शन है उसका. सर जब तक वो चल रहा है ना, ये पूरा पीपल को काम मिलेगा. Once my cotton industry stop, ये बेचारे तो बैठे. So that is direct employment and indirect employment. तो directly अभी वो पढ़ा. Go ahead. Foreign exchange earning about 12%. It contributes 5% towards GDP. It is only an industry in the country which is self-reliant and complete. उधर क्वेश्चन मार्क डाल दो. अभी से तो क्वेश्चन नोटबुक में लिख दो. Why textile industry are 100%. बोल पाता ना? Complete, 100% complete and self-reliant. इसका आंसर नहीं मिलेगा. मैं सिर्फ वर्ड दूंगा. reliant, not reliance. Self-reliance. देखो point number 1. Local raw materials. Use of local laborers. Next, full demand or maximum demand is from India. Is from India or local. India is the local. First of all, do you understand why is the question saying 100% complete self-reliant? Indian climate is out, hot and humid. So what kind of clothes even we prefer? Cotton, sir. और रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही मिलता है, टेक्नोलॉजी भी इंडिया का ही है, लेबरर भी इंडिया का ही है, और डिमांड कौन करता है? इंडिया भी करता है. देखो कुछ जैसे मैंने वो ऑरेंजेस का नाम लिया या ग्रेप्स का नाम लिया, बनता है इंडिया, बट डिमांड इज फ्रॉम इटली एंड फ्रांस. तो कैन यू कॉल दैट इंडस्ट्री इज 100% कंप्लीट एंड सेल्फ? नो सर, इट्स नॉट. इट्स प्रोड्यूस्ड हियर एंड सोल्ड समवेयर एल्स. बट whereas cotton textile is the only industry वो सेल्फ रिलायंट भी है और कंप्लीट भी है. कंप्लीट इसलिए है, हमारा कॉटन प्रोड्यूसर को टेंशन नहीं लेने का, अरे यार जब ये अमेरिका बेचना है ना, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, अरे इंडिया में ही तो बिक रहा है, तो जितना भी बनाओ. एक्सेप्ट फ्यू मंथ्स मे बी लाइक हमारा विंटर भी उतना ऐसा कोल्ड नहीं रहता है ना, दैट टाइम आल्सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. सो दिस इज द आंसर. रीड अहेड. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value of chain, that is from raw material to the highest value added product. That one line लोग ने बोलते हैं the value of raw material to the highest demand, सब कुछ उधर का ही है, nothing new. Go ahead. Sir, there is a map. No need. Go ahead.
last point. Hmm. The industry supports other industries, example chemicals, dyes, mill stores, Put all this into bracket. packaging. No need to read. Anybody ask me if any industry don't understand? देखो जैसे ही कॉटन बनता है फिर वो सिंथेटिक डाइज आता है, केमिकल डाइज आता है. डाइज मतलब क्या है? कलर देना. फिर उसके बाद क्या आता है? Sir, what is मिल्स. मिल्स. अभी बहुत सारा मिल्स है ना, खुद का स्टोर रखा है. अब दादर गए या परेल गए, कोई ना मिल्स है ना, परेल मतुलदास मिला, उनका ही शॉप्स रहता है. जैसे मैंने एक शॉप डाला फॉर एग्जांपल इन पार्टनर्स, एंड जो शॉप में मेरा क्लोथ बेचता है वो मेरे ही मिल से ही आता है. अब इसी को देखिए ये एडिडास और कौन सा रिबॉक हम लोग उल्लू बना था, फैक्ट्री आउटलेट 300% ग्रोथ. कुछ नहीं है, वो जो बाहर बेचते हैं उतने ही हो गए, है ना. And if you want to see real Adidas factory, you should go to Colombo. Did I say that? जो आपका ये Adidas पोलो टी शर्ट सब कोलंबो में आपको 300 रुपए में मिल जाएगा. श्रीलंका में है और क्या. बट आप ये कोई भी प्यूमा या रिबॉक कोई भी ले लो, इट इज नॉट अ फैक्ट्री आउटलेट एट ऑल. फैक्ट्री आउटलेट का मतलब क्या है? जिस शॉप डाला है वो उसका जो भी प्रोडक्ट्स आता है उसका खुद का फैक्ट्री से आता है. तो व्हाट ही नीड टू सेल चीप रेट. अगर मेरा फैक्ट्री से ही इज बाइंग, ही सेलिंग इट टू हिम, व्हाट विल ही डू? ही विल कीप प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ. फिर जब इसको मालूम पड़ता है अरे अगले से ने खुद अपना शॉप खोला है, बोलेगा सॉरी सर मैं उधर जा रहा हूं. क्यों? अरे जो बना रहा वो बेच रहा, तो तेरा जो प्रॉफिट है वो मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए. एंड आई डोंट नो यू आर वेरी दिस मार्केट क्रेजी और ड्राइविंग क्रेजी. वो कैसा वो लोग बोलते हैं ना आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेलर जो आपका सामने कपड़ा उठा के फेंकता है वो आपका आंख पहला पढ़ लेता है. उसको मालूम पड़ गया कि ये कपड़ा पसंद आ गया ना, देन ही विल बार्गेन लेके ले लो ना सर, क्या है सर आज के लिए डिस्काउंट है सर, बोले कल ही बोलो नहीं सर कल लगता है. और आप उससे बचने के लिए कुछ नया पैंतरा मारता है. अरे ये कलर है ना, वो भी है मेरे पास, ये पैंतरा, अरे वो भी है मेरे पास, अरे वो थोड़ा सा, अरे वो भी है मेरे पास. मतलब ही इज नॉट अलाउइंग यू टू गेट आउट ऑफ द शॉप ओनली. पैसे नहीं है, ठीक है आज लेके जाओ सर, कल ले लेंगे सर, क्या फर्क पड़ता है. हमको क्या करने का, ऐसे चुपचाप मैं तो लेता हूं. ओके ना, नहीं बाकी सच बोलो सर. फिर क्या नहीं, मैं तो बाहर बोलता तो अंदर है ये चीज है. psychological gap. And sorry to say the children are the best friends of the salesman. पेरेंट्स को जो ना ही पापा, चलो हम तो ऐसे बिहेव करते हैं, छोटा बच्चा तो उसका ऑपोजिट है. वो तो ऐसे नीचे लेट कर होता है, हेलो पापा को ये सब पसंद करता है. नहीं चलो ठीक है, होता है, हो गया चलो जाएगा. एंड ये वो कौन सा ईटेबल्स का मैंने देखा है, स्पेशली द इंडियन चिल्ड्रंस आर, आई डोंट नो, मैकडॉनल्ड्स लेके आता है, केएफसी से लेकर आता है. हर मॉल में ये फूड कोर्ट इज द ओनली प्लेस वेयर द चिल्ड्रन आर फाउंड, स्पेशली वो नेक्सस ना. अरे बाबा जगह नहीं मिलता बैठने के लिए. मैं और मेरे दोस्त के यूज ऑफ द टीचर हम लोग कैसे कर देते हैं, बल्कि से क्या है ये सब स्टूडेंट्स ही है और एंड हम लोग उठते भी नहीं है. 6-7 जन रहेगा, एक जाके एक खरीद के आएगा, 5 रुपए से चलेगा, खत्म हो गया. और एक वो भी बाकी है, लेकर आ, अरे ये भी बाकी लेकर यार जाओ किधर जाओ बैठो. तो हम वो स्टूल अलग इतना छोटा सा आप उधर खरीद के हो गया से निकले. देखो how these malls are really making fun of our guys, है ना. मतलब मॉल बनाया इसलिए है हमारा माल है ना पॉकेट से निकलने का. सॉरी टू दैट वर्ड. आप ये छोटा सा शॉप में जाओ आप उतना नहीं खरीदेंगे. मुझे याद है जब ये जियो आउटलेट सब आता है ना, पीपल आर सो हैप्पी. सर सब्जी भी है ना, मैं रिलायंस से खरीदता हूं. अरे मुकेश को बोलो यार, सब्जी बेचने वाले का पेट में तो मत लात मारे ना. सब्जी बेचना, क्या कार, टू व्हीलर, फोर क्या नहीं करता है. So what does it directly mean? Sir, commercialization, sir. And how you and me are escaping. कुछ नहीं, हम लोग भी उसी ट्रैक में. So that is why in Mumbai
ऑल्दो योर इनकम इज हाई, आपको लगता है कि आपको सेविंग है, चुपचाप रहो सर। कल है ना हम लोग 4 दिन के साथ मूवी गए और निकल के साथ आता। हाँ सर, एक तो मैं 4 डेज में गया सर, मुझे क्यों नाम नहीं सर, अच्छा लगा। Sir, average 4 weeks is approx 1 kilo. I have gone up till 1500, 1600. Yeah. And in abroad countries $34 to $50 का। तो मेरा दोस्त बोला तू जा, हम लोग नहीं जाएंगे। बोला देख 54 ना, तुझे देख। एंड फिर बीच में खाने का भूख भी लगता है, तो लोग पानी भी अलग नहीं करते। फिर जाके समोसा खरीदा मैंने, it was 350 rupees। हाँ यार, ये तो काम में उठा क्या, हाँ बोल रहा है। मुझे भी ऐसी है, मैंने बोला मुझे 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, 2 का ही कैसा। मैंने बोला रे टिकट करना 150 में खरीदा, उसी में तो इसमें लूट रहा है, चल दे। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग छुट्टी रहेगा तो उधर अगली लाइन से क्लोज बाय ना, तो उधर जाता हूँ ऐसा। बट घर में नाश्ता करके चलता है ना। फिर पानी का बॉटल, दैट नॉर्मल वाटर बॉटल इज 70 रुपीस। ये तो लूट हो रहा है सर, लूट नहीं सर, वो बाजू में सब होता है। हाँ, उधर दुकान ही है, लूट लूट का ऑप्शन। तो दैट इज व्हाई उद्धव ठाकरे टोल्ड कि हम थिएटर के अंदर झुमका पककर बेचेंगे। वो कुछ बेचा नहीं है, तो मॉल वाला चुपचाप बैठ के कमीशन आ रहा है, ठीक है मत बेचो, बेचो अपना एक। सबसे कॉमेडी मुझे पॉपकॉर्न का लगता है। हाँ, तो फिर वो पॉपकॉर्न जैसा पॉप होता है ना, फिर मैं भी उसका प्राइस सुन रहा हूँ। Its making price is very cheap. वेरी चीप है ना। हाँ, क्या है उसमें तेल और वो मसाला और वो प्रेशर कुकर में घर में भी हम लोग बना सकते हैं। हाँ, दे डू नॉट अलाउ। और वो ढूंढती है बैग में क्या है खाने का, उठा के रखो, ये मेरा खाना। हाँ, पानी के बाद खा सकते हैं, अंदर खरीद लो। देखा है वो शुरू से सर पे नाम करता है। मैं तो उधर जाता हूँ ऑनलाइन का टिकट, मैं बोला रे जब मैंने कल देखा प्राइस, नहीं सर ये बेस्ट प्राइस है। मैंने तो पूरा फोन किया, नहीं सर वो कौन सा प्राइस देखा वो। एक बार सबसे बड़ा कॉमेडी हो गया, वो कौन सा था, स्पाइडरमैन ना। आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट मार्वल एंड वो सब कभी भी देखता हूँ टाइम पास। एक स्पाइडरमैन वर्ड्स था, वो मुझे नहीं मालूम था, इट वाज अ कार्टून मूवी। मैंने टिकट भी लिया और जाके वो बैठा रहा। नो 10 मिनट हुआ, 5 मिनट हो गया, मुझे लगा वो कभी-कभी ग्राफिक्स आता है, पूरा मूवी है उसका तो। साला 750 रुपीस देखो। Then I very quietly came out for another one. ये क्या? हाँ सर वो तो कार्टून नहीं, मुझे नहीं सूट करता, मैंने देखा। So अभी टिकट पंच हो गया, टिकट पंच हो गया, but I don't want to see that movie. सर वो आप दूसरा कोई मूवी जाओ सर, जो पसंद है अंदर घुसो। मतलब ये क्या जो पसंद है अंदर, मेरा 3 घंटा या 2.5 घंटा मुझे वेस्ट हो रहा है। जो पसंद है वो बोला होगा। हाँ, उनको क्या पैसे रहते हैं ना, फिर वो बेचारे के उसका ऐसा था, फिर वो मैनेजर आया, हेलो सर क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प करूं, तो पैसा रिटर्न दो। मैंने ऐसे ही बोला सर, क्या सर, वो टिकट का पैसा रिटर्न दो। सर सॉरी सर नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारा जो मेन हेड ऑफिस है ना उसका फोन नंबर है मेरे पास, है मेरा एक फ्रेंड है उसका। रुकिए सर कुछ करेंगे सर, रुकिए के बाद कुछ नहीं, हाँ उसको बोला कि तुम यहाँ पर, फिर वो लग गया सर, वो मैंने मैनेजर बोला कुछ भी बोले, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं मूवी देखी। सर आपको दूसरा कोई मूवी नहीं देखी? क्यों सर, मेरा मूड नहीं। तो बेचारे सोचिए खास कुछ क्या है ना। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन लास्ट मंथ ना, 2 months बिफोर आई वेंट टू आईनॉक्स दैट नेक्सस, चुपचाप मेरा 2 व्हीलर में हमेशा बाहर ही लगा था वो नेक्सस वाला यूनिफॉर्म। सर अंदर जाइए सर, पार्किंग ओनली 10 रुपीस सर। हाँ ये ठीक है यार, टोइंग में लेके जाए तो साला पांडु काटने से 500-600 रुपए ले लेता है। तो मैंने एकदम स्टाइल से अंदर करके लेके गया, लगाया, फिर बाहर आया, फिर मूवी देखा, अच्छा हुआ, आई लाइक द मूवी। बाहर आके देख रहा हूँ तो किसी ने मेरा एक हैंडल का वो जो मैं एक्स्ट्रा वो सब लगा के फिटिंग रखी मैंने 2 व्हीलर के साथ, वो किसी ने घुमा के नीचे गिरा जो हंगामा की। I was getting late for some lecture, मुझे अभी कभी चाहिए
सर कैमरा दूर था सर, मतलब अभी मैं गाड़ी लगाते समय तुम्हारा अंडरग्राउंड पार्किंग है, मैं क्या कैमरा कहाँ है वहां ढूंढूं? 6 people came to that spot. पोलाइटली सर हम कुछ करेंगे, मतलब आप कुछ मत करो, ये मेरा मैकेनिक करेगा, मुझे उसका प्राइस दो। सर वो ऐसे रूल्स नहीं है सर, मतलब बनाओ रूल्स, इतना बड़ा पार्किंग है ना, वो बेचारा भाग भाग गया, सर आपका वो टिकट दे दो, मतलब मैं नहीं सर देखो जरूर है कि कैमरा में चेक कर, सर ये दिख रहा नहीं, मतलब मैं क्या करूँ, मेरा जो लॉस है उसका मुझे पैसे चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं गाड़ी के लिए छोड़ के जाऊंगा, और मेरे कभी क्लासेस से भी छोड़ना रहता है, वेट देयर इज सम प्रॉब्लम ये है, अरे वो अपन फेसबुक में डाल दो यार, तुम लोग का नेक्सस बहुत बड़ा बात है। अल्टीमेटली आधा घंटा लगा, मेरे से बात करते करते वो उन्होंने किसने क्या क्या बताया, उसने सब टाइपिंग कर दिया, सर नाउ यू कैन गो सर, मैं क्या अरे थैंक यू प्लीज सर, तो थैंक यू, हाँ नेक्स्ट टाइम हाँ सर डोंट वरी, एक बूढ़ा मैनेजर आया, फिर दूसरा एक मैनेजर आया, तीसरा पार्किंग मैनेजर आया, एंड बेचारा जो भी पार्किंग में था सब वो सब छोड़ के मेरे सामने गया, और मैं चिल्लाता था सर बहुत पैसा, this is the way you take care of your vehicles, I should have put it on the road, नहीं सर कुछ भी कुछ करेंगे सर, बोले क्या करेंगे, या तो पैसे दो या तो मैकेनिक रखिए ठीक कर, तो लिटरली आपने निकलता है, वेरी सॉरी सर, मतलब मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, उसका क्या नहीं सर आप नहीं सर, वो भी मानना होगा, मेरा 1 घंटे का पेमेंट इतना है, आधा घंटा है, चलिए इसका पेमेंट, अब ये बात तो सातों का सातों मेरा पेमेंट आइए सर, मतलब ये बाकी पब्लिक चिल्ला नहीं करेंगे, वो पैसा तो हो गया, अभी आगे क्या स्टेप्स है, आपका क्या प्रोसीजर है, आप ऐसे कैसे व्हीकल्स को छोड़ता है ना, देन दे विल फील अरे यार ये बैंड बजाने कोई तो आदमी आया, सर आप क्या करते हैं, बोले ठीक सर, अच्छी चीज सर, उस दिन मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आया, बेलापुर में एक हवलदार ने, मेरा इंश्योरेंस नहीं था, आई डिडंट सी दैट, काय सर तुम्ही तुमचा इंश्योरेंस अभी बघितलं ना, आता द्याना फाईन द्या तुम्ही, एक काम करा सर तुम्ही द्या, अरे असं नका करू सर, काहीतरी बोला, ठीक आहे मेरे पास कैश नहीं है, बोला सर दे दीजिए सर मिनिमम 2,500 रुपये रखा है, बोला 2,500, बोला एक काम करो बाइक रखो ना, कल गर्मी पड़ती है, असं नका करू सर, आहे का नाही, मैं उसको फाइन दे रहा हूँ, एक काम करा तुमचा इथे हे बघा सर इसमें मत दो, फिर बाजू में कोई एक मॉल है ना, वो कौन सा तो बेलापुर का होता है ना, ऑपोजिट में उधर गया, यार 1,00,000 रुपये निकाल लिया, बोले क्यों अरे I paid him in the cash counter 500, I took 500 rupees, फिर उसमें से मैंने 300 रुपये 200 रुपये पॉकेट में रख लिया, और इसके बाद अरे सर तुम्हें आलग कर, फिर किती माझ्याकडे 300 रुपये या तर क्या सोडा देतो, और वो मेरे से डायरेक्टली ले रहा नहीं, वो पर्पसली कैमरा के सामने दिखा रहा है, ऐसे दिया सर ऐसे दिया, मतलब हाँ सर निकला, वो टर्न में कभी वो लेफ्ट टर्न है ना, लेफ्ट टर्न, वो लेफ्ट टर्न फ्री एक्चुअली, वो उधर गधे का दिन कोई मिनिस्टर जा रहा था, तो यार ये कभी नहीं रुकता है, उधर रुक कैसे, तो उस दिन से मैं क्या करूँगा, जब भी मैं पनवेल से आता हूँ ना, वो बेलापुर पे टर्न है ना, थोड़ा सा डायरेक्टली टर्न नहीं मारूँ, फास्ट थोड़ा सा लंबा जाऊँगा, कोई काम सब रहता है हमारे पास, इंश्योरेंस है, वो है, तुमचा ओरिजिनल ड्राइविंग लायसेन्स मला डिजी लॉकर मध्ये आहे ना, असं नाही चालत, मला गव्हर्नमेंट रूल्स आहे, ठीक आहे सोडा, हाँ you can keep, you no need to keep the original, yes, अभी मैं अहमदाबाद भीड़ में गया था, जाते समय मेरा जो टीचर फ्रेंड था उसने वो क्या टोल नाका तोड़ के निकल गया, बोला आते समय वो मेरे से दुनिया है, ठीक है सर आप बोलते हैं ना मैं रुकता हूँ सर, उसका इसमें पैसा है, फास्ट ट्रैक में पैसा बट कट नहीं होगा, तो जब आप गाड़ी पे चलो 4-5 लोग आ गए, मैं तब तक चुपचाप ही बैठा था, तो खबर में पूरा सुनने का, मैनेजर से बोलो पीछे कम से कम 7-8 गाड़ी, तो मेरा दोस्त को बोला चुपचाप गाड़ी पीछे मत हटा, उधर ही स्विच ऑफ कर दिया, पीछे से चिल्ला रहे हो हटा ये हटा, तो उसको बोलते हैं सर वो टॉप अप करो सर, तो मेरा दोस्त को बोला टॉप अप कर उसमें फर्स्ट ट्रक में, तो कुछ 250 रुपये का 100 रुपये का किया, तो ट्रैफिक पुलिस ने क्या बोला सर 250 का मिनिमम करने का,
मैंने पूछा करा 250 का मिनिमम करने का कुछ रूल्स है क्या? नहीं सर तभी तो मेरा दोस्त ने क्या बोला, ये लोग 250 करने बोलते हैं और कट हो जाता है डायरेक्टली 150, जबकि 50 रुपीज ही कट हो जाता है। और पूछेंगे कैसे, और गेट तो खुल जाता है। तो मैंने बोला 100 रुपये कहता हूँ। फिर एक मैनेजर थोड़ा सा इंग्लिश बात करता है, यस सर हाउ आई हेल्प यू, मतलब व्हाट इज दिस योर गाइस आर टॉकिंग, व्हाट हैपेंड सर, अंदर बोल रहा है आनंद नगर बीड सबके अंदर था। मैंने बोला दिस इज कंटिन्यूइंग ना, आई हैव टू टॉक टू द आरटीओ पुलिस ऑफिसर who is my very best. No sir, you wait sir, you will do something. अंदर गया पता नहीं क्या, हाँ कट हो गया सर, कट हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। वो जो गधे लोग हैं ना, गाड़ी वाड़ी पटा कैसे सामने की तरफ रखते हैं, आसान नहीं होता है, सर। तो मैंने मेरा फ्रेंड को बोला अच्छा क्या पिछला टाइम तो बिना दिए निकल, वो क्या करता है एक गाड़ी और दूसरा गाड़ी को ऐसे नजदीक लगाना, दूसरा गाड़ी निकलने के बाद वो रेड इंफ्रारेड कुछ रहता है, वो पूरा निकलने के बाद वो गेट आता है। He is very smart. गेट आने से पहले गाड़ी जूम छोड़ रहे। तो आई बीइंग ए टीचर जनरली रूल्स नहीं तोड़ने का, देखा सर इसीलिए मैं इनको पैसे देता हूँ। और कितना था, ओनली 50 रुपीज का, बट 15-20 मिनट अच्छा खासा हंगामा हुआ। जो आवडतात ते सर तुम्ही बाहेर या आणि मी ते काय मॅनेजरला बोलवतो, मला बाहेर नाही यायचं, तुम्ही त्याला मॅनेजरला इकडे बोलवा, वो थोड़ा सा कुछ एक्सेस सफरिंग काय प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू आस्क योर पीपल, तो लागे वो आधा घंटे से दिमाग चाट पैसे नहीं दे। So whenever these rules are made, na, sorry to say, not only here, I've seen the rules are made for these kinds only. तो आप तुरंत बोलने का कौन सा रूल बुक में लिखा है हमको दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं सर, तो फिर क्यों बोलते हैं, है ना? अगर तू ठीक से बात करेगा मैं पैसे दे सकता हूँ, और उल्टा पैसे देने के बाद बोलने का तेरा बैच नंबर बोल, मैं तुझे कोर्ट में मिलता हूँ। क्यों सर, तूने जैसा बात किया मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। And you don't have any rights to speak to me. मैं कैसे बात कर रहा था तेरे से, अब बहुत प्यार से बात कर रहा था, तू क्या करके बात कर रहा था, मैं तो क्या आता नहीं कैसे से, ऐसे नहीं सर सॉरी सर। तो मैं तो मेरे दोस्त को ही बोला था दिन में एक कस्टमर ऐसे मिलना चाहिए, वो जाके पहले टकला मार लेगा तो ऐसे मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ता है, नहीं उसके लिए भी टैक्स है, क्यों मुझे 100 रुपए देने, unless and until we don't talk to these guys in this manner, they never listen. इधर सीट्स के एरिया में एक सिग्नल है, तो लोग उधर साइड में खड़े रहते हैं, जो भी बाइकर जाके लगेगा ना तुरंत जाके इंश्योरेंस नहीं पकड़ो, साइड में ले बता दो, आधा घंटा। तो वो मेरा फ्रेंड उसका मामा है कि आरटीओ में बड़ा ऑफिसर है, तो उसने तुरंत बोला मामा मैं ऐसे लोग कुछ सवाल कर ठीक है सर, अरे तू आमचा माणूस आहे तू जा ना, अरे फिर आधे घंटे से मेरे जिम्मा क्यों लेता है ना, चलिए ना आप है ना 2-3 अंकल जो काम किया पहचान कर रखी, हाँ बट यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, हर जगह रूल्स ब्रेक करो एंड आप लोग बोलते रहेंगे ना, दैट इज द प्रॉब्लम। चलो एक नाइस फनी इंसिडेंट है। Cotton textile history. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and hand loom weaving technique. Now you remember there is 2 words they might ask you, but it is generally not asked. What is the meaning of the word handlooms? And opposite is parlooms. What are parlooms? Textile which is used, generated using electricity. And this is by man or human being, है ना? Which is faster? Definitely parlooms. Okay, अभी majority से parlooms ही. Carry on. After the 18th century, parlooms came into use. Our traditional industry suffered a setback during a colonial period because they could not compete with the mill-made clothes. Underline that word colonial period. जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा ईयर डालने का नीचे डाल दो 1757 to 1947. 1757 is Battle of Plassey. Go ahead. Yeah.
The first successful textile mill was established in Mumbai in 1850. Underline that. In Mumbai. The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for clothes in UK. Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry. Underline the word boost. Features. As per 2020, there were 1946 cotton and human-made fiber textile mills in the country. Underline 1946. I say I thought it was a date. nah, so many people get confused. About 80% of these are in the private sector and the rest in the public. Underline. They will ask you why it is maximum in private sector. Go ahead. About 93% of the cotton cloth is produced in the decentralized sector. Yeah, underline करो. हाँ, उसका meaning क्या है? What is the meaning of the decentralized? That is small factories with 4 to 10 rooms. Yeah, what are they? What are things? Page Taking number. a slide. अभी वो बात नहीं करो. अभी तो हम लोग read कर रहे हैं. अच्छा. Location. It's okay. It's okay. Relax. Go ahead. Location. Initially, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Oh, underline that. सबको मालूम है ना Maharashtra is very famous cotton. Yes. It was localized because of the availability of raw cotton, market, transport and accessible ports, facilities, labor, moist climate. ना ये सब bracket में डाल दो. Factors enabling cotton textile where? In Maharashtra. In Maharashtra, Gujarat. Good. Okay. Today, cotton textile mills are spread over 80 towns and cities of India. Then they have given the names. नहीं वो सब नहीं. Go ahead. Wide market, transport, banking facilities, and electricity contributes towards decentralization of cotton textile mills in India. Skilled labor makes specific varieties of cotton textile all over the India. Underline skilled labor. Importance. Cotton textile industry has close links with agriculture. Provides a living to farmers, cotton ball pluckers, and workers engaged in ginning. That is making of thread from the cotton. Ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, something. Tinkering. Tinkering. No, tailoring. Tagging. No, tailoring. Tailoring. Oh my God. What is the word? Tailoring. And civil. Hey, listen. Why this word is common? Because अभी टेलर लोग तो almost मैन के बराबर है. ये देखा आपने एरिया में गलती से बेचारे बैठे रहते हैं एक दूसरे. और मुझे अभी भी याद है मेरे स्कूल डेज में ना we used to get the school uniform from the tailor only. चेंबूर में हम लोग रहते थे. पहले जाके वो कौन सा उसको एक फेमस सावन बता. तो पापा उधर से शर्ट व्हाइट कलर का एंड ग्रे कलर का ट्राउजर्स. We were in ICS. तो पहले लेने का फिर वो टेलर के पास जाने का वो टेलर जो इस करेगा फिर देगा. अभी किधर है टेलर? एवरीथिंग इज रेडीमेड नाउ. टेलर जितना मांगता है स्टिच करने का उतना तो आपको दो शर्ट बन जाए. Correct. So today also cotton textile is number one next to agriculture. Why? Majority people are employed both directly and indirectly. अभी समझ में आएगा ना? Even tailor is also an indirect person. He is also getting. Okay. So The industry by creating demand support many other industries such as chemicals and dyes, mills, mill stores, packaging materials and engineering works. okay. Weaving. अभी if I say engineering, cotton textile में कहाँ आता है? Engineering मतलब machine बनाना. Which machines? The stitching like. वो तो अलग है. Cotton हाँ power looms में. Have you seen cotton production?
अच्छा इसका ले मैं दिखाता हूँ by the time हाँ ये साइड दिखाती है Weaving is done by hand, power loom, and in mills. The handspan khadi provides large-scale employment to weavers in their homes as a cottage industry. underline large scale और वो अपने घर पे ही बैठ के वीविंग कर रहा है Yes. हाँ that is good thing हाँ Cotton yarn forms an important part of India's export trade. India exports yarn to Japan. underline that and nobody can forget India is the biggest trader of cotton even today also actually Bangladesh है और बांग्लादेश के बाद अभी तो बांग्लादेश में तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है Cotton goods are exported to USA, UK, Russia, France, East Europe countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka, I'm showing next class African countries. okay go ahead Then there's shall I give you homework now cotton textile is complete ना एक jute textile है वो next lecture में problem is no the questions are there. problem ना चलो write few questions in your notebook give it at my volume ideas for the people what category is doing better now what category क्या हो गया अरे she doesn't want to look at me क्या हो गया चल write the first question for the homework 3 marks टाइप है ये पूरा 2 मिनट So आपका word limit है so each question is 3 marks So each what did you understand maybe questions. very bad understand write the question open inverted comma agriculture and industries Agriculture and industries complement each other you know what I mean by complementing indirectly हम लोग इसका interdependence पूछ रहे हैं full stop and close the inverted comma justify the statement Complement each okay next other. Close करने के बाद हाँ explain the statement industrialization ये कुछ नया है and urbanization industrialization and urbanization ये urbanization मालूम है ना cities yes जो industries की वजह से बहुत बड़ा बड़ा cities आ गया go hand in hand तो क्या hand in hand Agriculture and industrialization. agriculture and industry explain the line explain the statement I've given you 5 questions and this is a big module 3 marks ka hai. So let me say how many are going to get at least 10 marks I bet you 5 so total 15 15 में से अगर कोई 10 क्रॉस करता है कभी तो क्या चलेगा अच्छा लिखेगा तो सब मिलेगा and you'll see my method of correction also next so class like how big it should be 60 to 70 words half the page one answer एक पेज में 2 आंसर आने चाहिए बस classify the industries ये जो हम लोग ने मॉर्निंग में किया on the basis of capital investment classify the industries on the basis of capital investment so how are they different from one another how are they different from one another explain with example
Next. How many? 3 done? Huh? Yes. Okay, 2 more. Why was textile industry mainly concentrated on cotton growing belt of Why was the textile industry mainly concentrated on? cotton growing regions of Maharashtra and Gujarat. Regions of Cotton growing regions of Maharashtra and Gujarat. Next. Last one. Explain. ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, आपको बाहर से आंसर देना पड़ेगा. Role of industries. Wait, तुम बाथरूम जाके आने से पहले तो you can explain the role of industries in increasing water pollution. Role of industries in increasing the water pollution. Sorry, I am not sure. Stop. Suggest any 3 measures reducing the water pollution. Chalo, check this. If you want any help now, I can give points for any of the answers. Second, like 20 dollars. Then you can relax. Yes. Good. No need. जल्दी आ जाइए उधर के सोचो. So this is the only branch here. Washroom is a good one or a bad one? Good, huh? Good, good. वाला ज़्यादा better. Good. नीचे ये एक्चुअली क्या हो गया ना, ये लोकेशन मॉल के अंदर है. बट और एक अच्छा क्या है, इट इज वेरी नीट एंड क्लीन. And the tap card is an issue. ये volunteer जैसे कितना भी नहीं है. The battery. Because क्या हो गया ना, ये बिल्डिंग बना जब ये सामने वाला ऑफिस हो रहा है ना, पूरा ऐसा होता है. ये बहुत सारा ऑफिस इधर बुकिंग करेगा. किधर हुआ है? इसके पीछे जो टावर है उसमें है. इधर तो this sir was the only person who came very early at the movies. And वो बाजू में बिल्डर का ऑफिस था, वो दैट फिर मतलब तो और 2-3 बनाएंगे. ये सोना का तो मुझे पता नहीं क्यों हमारा कॉल कर. बट मैंने सुना ये पूरा ऑनलाइन पे बेचता है डायमंड. फिर उस तरफ एक कटलरी का शॉप देखा. हाँ. वो तो मैं जब से तरीके मैंने कितना साल हो गया वो वैसे के वैसे. Nobody purchased. But there also I heard that this business outlet from online. But उनको दिखाना पड़ता है कि किधर है. So then any subject related, anything you want to share, ask. Oh, it's almost time, huh? 10:45. So it is not. Yeah, that's. Oh, okay, okay. So you can enjoy your tiffin and Baka